আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ যদি এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু কাৰোবাৰ যদি এজমেটিক প্ৰব্লেম আছে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে ভালকৈ চাওক। डेफिनेशन में यही बता दूंगा ना, पल्मोनोलॉजिस्ट एलर्जी सुपर स्पेशलिस्ट चीफ एलर्जिस्ट सुपर चीफ एलर्जिस्ट अश्विनी एलर्जी सेंटर। নমস্কাৰ, মোক চিনি পাইছে হয়তো, মই জাভেদে ক'লোঁ। চ' আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' এটা বনাব ইচ্ছা কৰিছোঁ। মই বৰ্তমান হায়দৰাবাদত আছোঁ আৰু আমাৰ মানুহবোৰ বিশেষকৈ কিবা বেমাৰ হ'লে হায়দৰাবাদত আহে পেচেণ্ট হিচাপে ডক্টৰৰ ওচৰত। আৰু ময়ো তেনেকৈ 2022ত এজন ডক্টৰৰ তাত আহিছিলোঁ। মোৰ বিশেষকৈ এলাৰ্জি হৈছিলে। এলাৰ্জি বুলি কওঁতে মই কাহি আছিলোঁ, কাফ একদম অসহ্যকৰ কাহি আছিলোঁ 2 বছৰ 3 বছৰ। আৰু সেই কাহি থকাৰ কাৰণে কি হৈছিলে, মোৰ বেলেগ একো কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ, বা চৰ্দি বেছি হৈ আছিল। এলাৰ্জি যোনবিলাক চিমটমছ, বা ৰঙা হৈ যায় খজুৱালে। তো এইবোৰ বস্তুৰ মই 2 বছৰ দি অসমত বহুত ঘূৰিলোঁ ডক্টৰৰ তাত। পিছত মোৰ ঠিক নহ'ল একো। ঠিক নোহোৱাৰ পিছত লাষ্টত মই বহুত চাৰ্চ কৰি, নেটত হওক কিবা চাৰ্চ কৰি মই হায়দৰাবাদৰ এজন ডক্টৰক পালোঁ, ডক্টৰ বিয়াকৰণম নাগেশ্বৰ ছাৰ। তেখেতক মই মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে নমস্কাৰ। তো তেওঁ মানে মোক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে। মই আহিলোঁ, অহাৰ পিছত কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে গোটেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি তেওঁ দেখুৱালে, কি কৰিছে কি নাই কৰা, মোক টেষ্ট কৰিছে। গোটেই টেষ্ট কৰিলে, আফটাৰ টেষ্ট মোৰ নামত ভেকচিন বনাই দিছে। ভেকচিন মুম্বাইত বনাই পেলাই মোক পাৰ্চেল কৰি পঠিয়াই দিছে। তাৰপিছত সেই ভেকচিনটো মই ল'লোঁ আৰু 2-3 বছৰৰ মোৰ যোনটো কাহ আছিল মোৰ ঠিক হৈ গ'ল। চ' মই তেওঁক তাৰ আকৌ আহিছিলোঁ, তেওঁক মই ধন্যবাদ জনালোঁ যে ইমান ভাল হ'ল। তো এইখিনি বস্তুৱে মই যাতে মানুহে গম পায় পাব্লিকলি, কমপ্লিটলি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তেওঁক মই দিছোঁ মাইকটো, তেওঁ ক'ব যে কি এলাৰ্জি কি বস্তু, আৰু কোনোবা পেচেণ্ট ইচ্ছা কৰিলেও আহিব পাৰে। आप सबके लिए नमस्कार। असम से हमारा बहुत ज़्यादा नाता है, रिश्ता है, क्योंकि हमारे भाईजान जैसे पेशेंट बहुत आते। इतना दूर से इतना विश्वास रख के उम्मीद के साथ वहाँ से यहाँ तक क्यों आते बोले तो जो एलर्जी का मसला है, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगा कि एलर्जी का मतलब ये होता है खुजली है, एलर्जी का मतलब ये होता है डस्ट एलर्जी, छींके आ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि खाली ये एलर्जी है, एक सिट्रजिन टैबलेट ले लेंगे, एक एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड ले लेंगे, कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है, कम तो टेम्पररी होगा ही, लेकिन फिर बढ़ के आएगा। जब बढ़ के आएगा तो और ज्यादा तकलीफ लेके आएगा। इसलिए जब आप बच्चे रहते, छोटे रहते, छोटे बच्चों में अगर खुजली होता है, छींके ज्यादा आ जाते हैं, आंखों में खुजली हो जाता है, सांस का तकलीफ जो हो जाता है, दम्मे की बीमारी जैसा, तो इन लोगों में हम क्या करते, टेम्पररी ट्रीटमेंट छोड़ के ये सिट्रजिन और आस्थमा का जो स्टेरॉइड, ये सब छोड़ के हम ये करेंगे कि ये रूट कॉज को पकड़ेंगे। रूट कॉज को जब तक आप नहीं पकड़ते, रूट कॉज को आप आइडेंटिफायर के दूर नहीं करते, तब तक आपका तकलीफ कम होगा, फिर बढ़ के आएगा। बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास आके, हजारों गोलियां खाए सिट्रजिन, हजारों सिट्रजिन के साथ स्टेरॉइड भी खाए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा खुजली कम नहीं हो रहा, मेरा दम्मे की बीमारी कम नहीं हो रहा, मेरा साइनोसाइटिस कम नहीं हो रहा। बच्चों से लेके आते, तो हम सबको यही बता रहे कि भाई वो गोलियों से एलर्जी से नहीं निपटेंगे। क्यों? एलर्जी से निपटना है तो स्टेरॉइड, एंटीहिस्टामाइन, एलर्जी का दवाई टेम्पररी ही काम आएगा। निकलना है तो क्या करना है, रूट कॉज को पकड़ो। कैसा करते रूट कॉज? सिंपल, एलर्जी टेस्टिंग करते, 2 साल उम्र बच्चों से लेके 80 साल तक के लिए करते। ये जब टेस्ट हम करेंगे तो खुला पता चल जाएगा कि फूड आइटम्स किस वजह से ये एलर्जी बढ़ रहा है अंदर, और पर्यावरण का चीज में किस वजह से बार बार ये पीछे पड़ रहा है। हम जब ये आइडेंटिफाई करते हैं तो फूड आइटम्स को हम 1 साल तक छोड़ने के लिए बोल देते। पर्यावरण का जो चीजें हैं, जो पॉजिटिव आ रहा है, उसको हम इम्यूनोथेरेपी देते। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि दुनिया भर में एलर्जी का ट्रीटमेंट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस्ड ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी होता है। ये हमारे भाई साहब के लिए भी हम दिए, जबरदस्त इस्तेमाल करें, अवॉइडेंस अच्छा करें हमारे भाई साहब, और रिजल्ट भी 2002 में आए थे हमारे पास, और आज 2022 में आए थे, और 2025 देखिए नाउ ही इज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होता है जब हम मिलते हैं पेशेंट को और वो हमसे मुस्कुराहट बोलते हैं कि सर आपने मुझे ट्रीट किया, मैं अच्छा हो गया।
तो मेरा को अच्छा जब हो जाता है, मेरा खुशी उनको अच्छा करने में लगता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एलर्जी टेस्टिंग करवा के वजह को ढूंढ के वजह को दूर रख के और इम्यूनोथेरेपी लिए तो बॉडी में हिस्टामाइन केमिकल नहीं बढ़ेगा, एलर्जी कम हो जाएगा और बीमारी से बाहर निकलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। সো মই এইটোৱে ক'লোঁ, তেওঁ এইটো বুজাই দিছিলে, ওচৰত লৈ আনি মই কৈছোঁ, তেওঁ এইটোৱে ক'লে যে এলাৰ্জি হ'লে মেডিচিন খাই লাভ নাই, তো ফাৰ্ষ্ট আমি টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব, এলাৰ্জি স্পেচিফিক টেষ্ট, কিহলৈ এলাৰ্জি হৈছে। তেওঁ এনেকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ, নামটো নেদেখুৱাওঁ, জাষ্ট এটা ৰাফলি মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰিপৰ্ট এটা। ছাপ'জ এইটোৱে মোৰে ৰিপৰ্ট আছিলে, এইটো চাই ল'লে হ'ল। এনেকৈ তেওঁ বিচাৰি উলিয়াই যে ক'ত ক'ত বেমাৰ আছে, আমাৰ কিহত বেমাৰ আছে, টেষ্ট কৰে, স্পেচিফিক টেষ্ট আছে। যিহত বেমাৰ আছে তাৰপিছত তেওঁ তাতে লিখি দিব যে ক'ৰ পৰা বেমাৰ হৈছে, এইবোৰ বেমাৰ হৈছে, এইবিলাক এনভাইৰনমেণ্ট ফেক্টৰ আমি এভইড কৰিব লাগিব, আৰু এইবোৰ ফুড হেবিটছ আমি এভইড কৰিব লাগিব, যেনেকৈ ফুড মোক এলমণ্ড, চকলেট এইবিলাক বস্তু এভইড কৰিব দিছিলে। চ' আমি এভইড কৰাৰ পিছত লগতে এইখিনিৰ কাৰণে আমাক ভেকচিন বনাই দিব, যোনটোৰ কাৰণে ভেকচিন। আৰু যেতিয়া ভেকচিনটো বনাই দিব, ভেকচিনটো বনাই দিয়াৰ লগে লগে সেই ইমিউনথেৰাপিটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ সেই ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু আমাৰ ভাল হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তো মানুহে নাজানাৰ ফলত কি হয়, য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰে, বেলেগ হস্পিটেল, ডিফাৰেণ্ট হস্পিটেলত যাব, কিন্তু ন' ৰিজাল্ট। কিন্তু ইয়াতে মই আহি পেলাই ইমান ৰিজাল্ট পালোঁ, সেইকাৰণে মই তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। চ' আৰু তেওঁৰ ইমিউনথেৰাপিৰ বক্সকেইটা দেখুৱাই দিব। जी, ये जब हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, एलर्जी टेस्टिंग करने के बाद हमको ये खुलासा हो जाता है कि वजह को पकड़ते हैं। तो वजह को तो फूड आइटम्स को और पर्यावरण का डिवाइड करेंगे रिपोर्ट में। जो पर्यावरण का है तो फूड तो छोड़ेंगे हम, पर्यावरण का क्या करें तो इम्यूनोथेरेपी लेते हैं। जो इम्यूनोथेरेपी हम बताते हैं, ये है इम्यूनोथेरेपी। दिस इज ए परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बनना के बाद ये आपको ऑर्डर करके लेना है। सबको एक ही नहीं आता, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी के एलर्जी के हिसाब से जो जरूरत है उसके हिसाब से हम उसका एनालाइज करके रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद ऑर्डर करने के बाद ये 1 महीने में आ जाता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन का बॉक्स जब हम लेते हैं, पेशेंट को दे देते हैं, तो हम बोलते हैं कि करेक्टली लेना, सिंपल है, ना इंजेक्शन लगाने का है, ना हॉस्पिटल जाने का है। घर में बैठ के जबान के नीचे 2 बूंद डाल दिए तो ट्रीटमेंट हो जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल इम्यूनोथेरेपी, हम इसको बोलते हैं। তো এইখিনিয়ে আছিল, তেওঁ বুজাই দিলে যে এইটো যোনটো ইমিউনথেৰাপিৰ যোনটো ভেকচিন দিছে, এইটো মানে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ছেম নহয়, ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনছৰ কাৰণে তেওঁ বনাই দিয়ে। এইটো ইয়াতে বক্সত নেম লিখা থাকে যোন পেচেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া মই নেমটো নেদেখুৱাওঁ বাৰু এতিয়া, জাষ্ট নেমটো লিখা থাকে ইয়াতে। আৰু মোৰ কাৰণে দিছে, তো মাই নেম উইল বি হিয়াৰ। অ'কে, চ' স্পেচিয়েলি ইট উইল বি মেড অনলি ফৰ মি। অ'কে, চ' এনেকৈ পাৰ্টিকুলাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ ভেকচিন বনাই পেলাই পঠিয়াই দিয়ে, মোৰ কাৰণে যোনটো বডিক লাগিব, মানে এজ এ হ'ল নাথাকে। তো এইখিনিয়ে, চ' যাৰ যি বেমাৰ সেই হিচাপত দিব, আৰু ভাল হোৱাটো চিয়'ৰ। কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো 6 মাহত ভাল হ'ব, কাৰোবাৰ 1 years লাগিব, কাৰোবাৰ 2 years লাগিব, কিন্তু মানে ভাল হোৱাটো চিয়'ৰ। চ' দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰে, গুগল মেপতো মাৰিব। চ' ইয়াতে এইটো আশ্বিনী এলাৰ্জি চেণ্টাৰ, এইটো লিখা আছে ইয়াতে, আৰু লগতে এইটো তেওঁৰ হেৰিটো ডেজিগনেশ্যন নেম লিখা আছে। তো গোটেইখিনি পাই যাব। কাৰোবাৰ সুবিধা হ'ব বুলি মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ, আৰু ছাৰকো বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। थैंक यू। प्यारा लोग है इस करके सोचा है, बहुत शांतिपूर्वक लोग है, तो जरूर मन में है हम आएंगे असम भी। हम आपने तो बताया कि पेशेंट भी बहुत है, हाँ, पेशेंट क्योंकि वहां पे टैबलेट लेना, कम हो जाना, इमरजेंसी रहे तो हॉस्पिटल जाना, इंजेक्शन ग्लूकोज लगाना, जी, ये टेम्पररी हो जाता है। हाँ, हाँ। बगैर ट्रीटमेंट का, बगैर टैबलेट का एलर्जी से दूर रहना, ये हमारा टारगेट है। राइट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। চাওক, এই ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিটলি মানুহৰ হেল্প হ'ব বুলি, সহায় হ'ব বুলি মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াতে কোনো বেলেগ মটিভ নাই, কাৰণ মই নিজে ভাল পাইছোঁ, আৰু মই আশা কৰিছোঁ মোৰ নিচিনা যদি কোনোবাই ভুগি আছে, মানে মোৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে এলাৰ্জিক প্ৰব্লেম। চ' এলাৰ্জিটোৱে ভৱিষ্যতে যাই এজমেটিক প্ৰব্লেম হয়, যদি আমি কিয়ৰ নকৰোঁ ডক্টৰে কোৱা হিচাপত। চ' মানে কাৰোবাৰ যদি এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে, লগা হ'লে 2 বছৰ হওক, 10 বছৰ হওক, মানে এটা আপুনি হেল্প পাব বুলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। প্ৰত্যেকৰে বডি হিচাপত বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু লগতে যদি কাৰোবাৰ এজমেটিক প্ৰব্লেমো হৈছে, তেনেহ'লেও মানে আপোনাৰ ডাঙৰ এটা হেল্প হ'ব। চ' এইখিনি কৈ পেলাই মই সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।